I was rather surprised that over the weekend there were so many of my subscribers who told me that we are expecting a 1,200 points fall in the Nifty in this week, and is there something to be deeply concerned about? Well, I did expect some correction and some fall, and but I really could not understand where these people had got this information and on what basis were they saying so. We saw a pretty good fall on Monday. Tuesday also has been a little weak. But yesterday during trading hours also I had mentioned to my Premium Plus, and I had a video out also. I mentioned that I don't think this right now this week we are seeing a major crash. Yes, there is a confluence of events. Some correction is definitely uh, what I was seeing on the cards, but not like 1200, 1500 points, whatever decline in the Nifty. Friends, I have a few comments. There are a lot of people who, it's just 300 points, okay, 2 days Nifty has fallen. And whereas the Dow did recover substantially last night, you are seeing right now Dow futures is little flat only. In fact, slightly negative. Asia had started well, but it has weakened again. So be careful. We'll have to watch out, and we will give you the forecast for tomorrow. Is going to be a very different type of a day. It will have its sets of ups and downs. That's why I've requested people to join Premium Plus to get this information throughout the day and in advance as well. You can still do so by WhatsApping us on 9820861044. I have a few comments. Few people just on 300 points drop in the Nifty became so concerned. I wonder now what will happen when that big fall will come. And what you saw this week, anyway, there is a little bigger coming, and the bigger will be subsequent also coming. So what will happen to these people? They are not ready to withstand even some small shocks. Stock markets have given so many stocks 20 percentage up in 2 days, sometimes in one day, 1 hour also. But when 2%, 3% some stock falls, they are unable to face the situation. Market forces are such. So that's why now I'm more concerned not about this week or something, but when that big falls will come, how many of my subscribers are prepared to face that situation. Secondly, I think that lot of people are sourcing information from different places. It is good, but you must try to have one leader. I will tell you one thing, whenever I do my predictions or I write or say something on YouTube, it is that time I have nothing on, no television, nothing. I have my own calculations. I follow I have one leader, and that is my conscience. I've done my work with good conscience. Somebody has commented very much yesterday that you have these timings but not technicals. If you go and see and perfectly understand, timings go far beyond technicals. You have not followed some. This was a person in my subscriber list. Timings go much beyond that, and they are much easier to implement provided you follow and understand them well. If you do not, there are people who want to double the very first day they join my Premium or Premium Plus. That I cannot. But if you stand and understand my techniques, people have made very good money. But there will be gyrations in the market, and as the time passes, in fact, the best of the action of this year, which is action, I mean up and down, has not even started. The real fun of this year 2021 has just kind of commenced. Just commenced. You will see so many things coming in from here. Okay, so this is going to be an interesting year, and you must view this in proper perspective. And please do join Premium and Premium Plus, and be a part of our groups, so we can discuss this throughout the day, and we can give you more insights as to how the markets will be tomorrow, options expiration day, how this
monthly options can expire and where we go from here. Okay, number to get in touch 9820861044. भाई और बहनों, एक 300 पॉइंट निफ्टी का लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जब बड़ा करेक्शन आएगा कैसे कर पाएंगे, मुझे उसका थोड़ा डर लगा। दूसरी बात, ये संडे को बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि हम 1000-1200 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूट्यूब में आ रहा है। भाई अब कौन लिख रहा है, मैं तो नहीं देखता। मुझे तो पता नहीं कौन बोल रहा है। मैं रिस्पेक्ट सबको करता हूँ, सबको नमस्ते, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। ये हमारे ब्लड में नहीं, हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग दिया हमें। सबको नमस्ते, सबको सब खुश रहे, सर्व सुखी नव भवंतु। ठीक है, लेकिन अब किसने कहा कि लोगों को इतना फैल गया। ठीक है, कुछ मंडे का तो करेक्शन आया ही, मैंने कल कहा था कि ये रिबाउंड कुछ आएगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा 1100 का मैंने नहीं कहा था एक्सपेक्ट, थोड़ा वीकनेस इस हफ्ते में दिखाई दिया था। लेकिन फ्राइडे को ही, जो मेरे प्रीमियम प्लस है, फ्राइडे को ही मैंने मार्केट क्लोज होने के पहले कहा था कि नरम स्टार्ट होगा मंडे को। किसी से भी पूछ सकते हैं, प्रीमियम प्लस पहले कह चुका था। जो पुट लेके बैठे थे, बहुत सारे मेरे हैं प्रीमियम प्लस और बहुत ज़बरदस्त पैसे कमा गए। हाँ, पर आपको फेथ होके और मेरा ज्वाइन करना होगा प्रीमियम प्लस ना। नंबर है संपर्क करने के लिए 9820861044। फिलहाल अमेरिका का जो मार्केट है, फ्यूचर्स थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव। और दूसरी बात जो है, एशिया सुबह जो शुरू हुआ इतना अच्छा, कल डॉ ने परफॉर्म किया, अब थोड़ी वहाँ भी नरमी दिख रही है। कल कैसा होगा, एक बहुत ही सनसनी होने वाला है, बढ़िया ये। लेकिन मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि आपको जाना है कल कैसे ये महीना का ऑप्शंस एक्सपिरेशन आ रहा है, और आगे ये रेस्ट ऑफ द ईयर कैसे रहेगा। मेरे हिसाब से तो जो हलचल होनी चाहिए 2021 में, अब तो शुरू भी नहीं हुई। अब तो रियल हलचल आनी है, ऊपर की नीचे की सब आएगी। और जब तक आप मार्केट का मोमेंटम और डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे, आप बहुत मुश्किल है इस मार्केट में पैसे बनाना। अब बना के भी गवा देंगे, इतना मैं ऐसे लिख के रहिए। जब तक आपको पता नहीं, अभी जैसे आज है, मुझे पता ही नहीं कि अगस्त में कैसे रहेगा, सितंबर में कैसे रहूँगा, दुक्केबाजी कर करके। जब तक मोमेंटम ऊपर है तब तो करेंगे, जब खिसकेगा 300 पॉइंट नहीं लोग सब बर्दाश्त कर सके, तो जो मेजर फॉल्स आने वाले हैं, जब आएंगे कुछ, सब अब चालू होने वाला है एक्शन, और चलते रहेगा नेक्स्ट ईयर तक, अप एंड डाउन बहुत, मैं सब आपको बताऊंगा। तो संपर्क करके ज्वाइन करेंगे 9820861044। जय हिंद, जय भारत।